previous video I have discussed the poem and its meaning. If you haven't seen that video, description box रे हमें video link provide कर दूँगा. You can check that out. So let's start with the first question, and let me remind you, All Things Bright and Beautiful poem. It is written by Cecil Frances Alexander. के लिखिଛନ୍ତି Cecil Frances Alexander All Things Bright and Beautiful poem टी को लिखिଛନ୍ତି. तो पिलाମାନେ चलो first question को देखि नबा. What does the poet think of all these things? Poet जो हमर कवि अछंती Cecil Frances Alexander से सब जिंस विषय रे कोन भाबुचंती. तार आंसर होची The poet thinks of all things in this universe as bright, beautiful, wise and wonderful. So poet कोन भाबुचंती जेहेतु एटी does अछि क्वेश्चन रो आंसर लिखिला बेले verb रे s लागिवो. So the poet thinks of all things in this universe. विश्व रे जेते सारा जिंस अछि poet ता विषय रे कोन भाबुचंती that all these things are bright, सब जिंस उज्जवल, beautiful, सब जिंस सुंदर, wise माने विज्ञ, आउ wonderful माने आश्चर्य. तो poet सब जिंस विषय रे भाबुचंती कोन ना all these things are bright, beautiful, wise and wonderful. So now let's take the second question. Who has made all these things? ए सब जिंस को किए बनेचंती. आउ मु भाबुची तो माने यार आंसर जानिथिबो. The Lord God. यार सब सृष्टिकर्ता के भगवान. The Lord God has made all these things. भगवान हे ए सब जिंस को सृष्टि करचंती. Third question होची What are the little things mentioned in the poem? को छोटो जिंस विषय रे कवि ए पोएम रे वर्णना करचंती. The little flower and the birds are the two little things mentioned in the poem. ए पोएम रे को छोटो जिंस विषय रे वर्णना कराइछि. The poet has discussed about the little flowers and the little birds. छोटो चढ़ई आउ छोटो फूल विषय रे पोएट ए पोएम रे वर्णना करचंती. How does the poet describe the beauty of flowers? Poet ये जो poem रे All Things Bright and Beautiful रे गोटे फूलर सौंदर्य को केमती वर्णना करचंती. Beauty of flowers माने beauty रो अर्थ होची सौंदर्य. Beauty of flowers माने फूलर सुंदरता को poet टी केमती वर्णना करचंती. Describe रो माने होची वर्णना करिबा. So the poet describes that the beauty of flowers पिलाମାନେ एटी भूल रे बर्ड्स हे जाईची एटा को फ्लावर्स कर दबो. एटा भूल रे बर्ड्स हे जाईची एटी हबो फ्लावर्स. So the poet describes that the beauty of the flowers lies in its glowing color petals. फूलर सौंदर्यता कोथरे थाए तार ग्लोइंग कलर चमकुथिबा पेटल्स रे. पेटल्स रो अर्थ होची पाखुडा. ता चमकुथिबा पाखुडा रे थाए. How does the poet describe the little birds? Poet ए पोएम रे छोटो चढ़ई को किपरि वर्णना करचंती. The poet describes that the little birds have tiny wings and they also sing beautifully. So poet कोन कहचंती जे जो छोटो छोटो चढ़ई माने अछंती से माने बहुत सुंदर भाव रे गीत गांती. आउ से मानकर छोटो छोटो डेणा मध्ये थाए. टाइनी विंग्स रो अर्थ मु काली समस्त को कहितली. टाइनी विंग्स रो अर्थ मु तमन को काली कहितली. टाइनी विंग्स रो अर्थ होची छोटो डेणा. एंड दे आल्सो सिंग वेरी ब्यूटीफुली. आउ से माने मध्ये सुंदर भाव रे गीत गांती. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. How is the mountain described in the poem? How is the mountain described in the poem? Poem रे कवि mountain को किपरि भाबरे वर्णना करचंती. So the mountain top is described in the poem as purple headed. Mountain विषय रे कोन कहैछि जे mountain रो top टा, that means mountain रो शिखरटा purple headed देखाउछि. Purple headed कोन? The combination of blue and red color is known as purple color. And purple headed रो माने कोन? जेतबेले पर्वत रो शिखरटा पर्पल कलर देखा जाए, दैट इज नोन एज पर्पल हेडेड माउंटेन. नेक्स्ट होची हमरो व्हाई डज द माउंटेन अपीयर पर्पल हेडेड.
माउंटेन पर्पल हेडेड कौन पाई देखा जाए? That means कहीं देखा जाए. The mountain appears purple headed because of the rays of the setting sun fall on it. ଯେତେବେଳେ setting sun सूर्यास्त ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣଟା ମାଉଣ୍ଟେନ ଉପରେ ପର୍ବତ ଉପରେ ପଡ଼େ ସେହି ସମୟରେ ମାଉଣ୍ଟେନ ଟପଟା ପର୍ପଲ ହେଡେଡ୍ ଦେଖାଯାଏ. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को ଯିବା. What brightens up the sky? The morning brightens up the sky. ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆକାଶକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳିତ କରିଥାଏ. तो चलो पिलाମାନେ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. How does the sky look during the sunset? सूर्यास्त समୟରେ आकाशर रंग किभଳି ଥାଏ? At sunset the sky looks red filled with the red glow of the setting sun. सूर्यास्त समय तुमने नोटिस करथिबो जे आकाशर रेड कलर देखा जाए. सो एटी मध्ये से लिखा हिची एट सनसेट द स्काई लुक्स रेड. आकाशटा रेड कलर देखा जाय थाए. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज वेरी इंपोर्टेंट. व्हिच आर द टू सीजन्स मेंशन्ड इन द पोएम? ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल पोएम रे दुईटी सीजन मेंशन कराइची. व्हाट आर दे? सो द आंसर इज the two seasons mentioned in the poem are the winter and the summer season. You need to remember it. First one is winter season and the second one is summer season. And next question is, why does the poet consider the summer sun as pleasant? Poet summer sun को pleasant बोली कहीं के भाभी चंदी बा मानी चंदी. The answer is the poet considers the summer sun to be pleasant because poet summer sun को pleasant बोली मानी चंदी. कौन पाई? In England रे the summer is temperate जोठी बेसी गरम हुए नहीं and that it has a mild temperature. जेमती आमर इंडिया रे बहुत गरमटा बहुत गरम लगे किंतु इंग्लैंड रे सेमती नो. It is a cold country so it has mild temperature and without extremes of heat or cold. बेसी ठंडा भी हुए नहीं कि बेसी गरम भी हुए नहीं. It has mild temperature जोटा कि तुम्हें मीडियम टेम्परेचर भी कहि परिबो. नेक्स्ट क्वेश्चन होची, व्हाट डू वी एंजॉय इन द ग्रीन वुड? व्हाट डू वी एंजॉय इन द ग्रीन वुड? हमें ग्रीन वुड रे बा फॉरेस्ट रे कोन एंजॉय करथाउ? वी एंजॉय वाचिंग द साइट ऑफ टॉल ट्रीज एंड वॉकिंग इन द वुड. हमें जंगल रे लंबा लंबा गछ मान को देखि एंजॉय करथाउ आ जंगल रे चालिबा मध्ये समस्त को भल लागे. हाउ आर meadows यूजफुल टू अस? meadows बा एन ओपन एरिया ऑफ ग्रासलैंड को कहा जाए meadow. आमो पई किपरि यूजफुल हेई थांती दरकारी केमथि हेई थांती आमो पई? meadows आर यूजफुल टू अस बिकॉज़ वी प्ले डिफरेंट गेम्स देयर. केमथि हेई थांती? बिकॉज़ इन द meadows वी प्ले डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेम्स. बहुत प्रकार खेल हम सेठी खेली थाउ. इन दैट वे meadows आर यूजफुल फॉर अस. Where do the rushes grow? Rushes means the water side plants, variety of water side plants. Rushes कोठी grow होता है, कोठी बड़ होता है. The rushes grow in or near water. पानी भितरे नहले पानी पाखरे होता है. पानी कड़रे मध्य rushes माने grow होतांती. Why do people gather the rushes? लोक माने rushes को water side plants को कौन पे gather करंती? Gather means collect करंती. कौन पे collect करंती? People gather the rushes because they are dried off and made into mats and baskets etc. So लोक माने कौन पे rushes को collect करंती? Because rushes are used to make mats and baskets. सेत्रु समाने सुखेगी ताको dried off अर्थ होची ताको सुखेगी समाने सेत्रु mat बा मसिना आउ basket इत्यादि तयारी करंती. I hope it's clear. तो चलो पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. Okay. So, why has God given us eyes? भगवान हमको आँखें कौन पे देचंती? God has given us eyes to see and enjoy the beauty of His creation. भगवान जो सुंदर सृष्टि करिचंती, creation means सृष्टि. तांको creation को देखिवा पाई आउ enjoy करिया पाई He has given us eyes. से हमको आँखें देचंती. Why has God given us lips? एटी लिप्स अर्थ कौन? द पावर ऑफ स्पीच. जो कथा कहबार क्षमता, कथा कहबार शक्ति. Why has God given us this? God has given us the power of speech. बा लिप्स मध्ये लिखि परिबो एटी पावर ऑफ स्पीच बदल रे to praise His greatness as the maker of all things. Is the maker अर्थ कौन? सृष्टिकर्ता. जे भगवान सब जिंस को सृष्टि करचंदी.
एंड बिकॉज ऑफ दैट आम प्रशंसा करवा उचित महानता को ग्रेटनेस हिज ग्रेटनेस अर्थ कौन हिज ग्रेटनेस अर्थ हूँ ये महानता से आम प्रशंसा करवा उचित हमारा लास्ट क्वेश्चन हूँ हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब गॉड पोएट ए पोएम रे भगवान को किपरि डिस्क्राइब करचंदी बा किपरि वर्णना करचंदी द पोएट डिस्क्राइब्स गॉड एज द मेकर ऑफ ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल ग्रेट एंड स्मॉल एंड वाइज एंड वंडरफुल भगवान को किपरि वर्णना करचंदी इन द वेरी फर्स्ट लाइन इट हैज मेंशन्ड दैट ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल तो भगवान केमती डिस्क्राइब कराई पोएम रे जे भगवान सबु जिनसर सृष्टिकर्ता जी दुनिया रे ब्राइट जिनस अच्छी जी ब्यूटीफुल जिनस अच्छी जी बड़ जिनस छोट जिनस सबुर सृष्टिकर्ता होचंदी भगवान एंड ही इज ऑलमाइटी एंड हैज गिवन अस आईज टू सी हिज क्रिएचर एंड स्पीच टू प्रेज हिज ग्रेटनेस एज द मास्टर आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिवर्स जे भगवान सबु जिनस सृष्टि कला परे हमको भगवान आखि देचंती व्हाई गॉड हैज गिवन अस आईज टू सी हिज ब्यूटीफुल क्रिएशन तांकर सुंदर सृष्टि को देखिबा पई भगवान हमको आखि देचंती आउ ताको प्रशंसा करिया पई हमको भगवान पावर ऑफ स्पीच दैट मीन्स लिप्स मध्य देचंती जे कि पूरा दुनिया रो पूरा विश्व रो सृष्टिकर्ता द मास्टर आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिवर्स